Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, Dhruv. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Tanay. Okay. So, Good evening, sir. good evening. Good evening. Okay. Let's start. So, Yeah. sir, that homework which you gave, no? Yeah. I'll be discussing So just that's right not, now. I had a doubt. Okay. I'll be just discussing those questions. Don't worry. Yes, sir. Thank you, sir. Let's see. So in the previous lecture, we discussed about the part of displacement, how we can find the certain particular displacement and the final position sort of things. So in that part, I gave some questions for the homework also. So first, let's discuss those questions, and after that, if you have doubt, you can ask for those questions. So let's see the first question. Let's discuss it. So in the first question, let's read the example one. So most of you must have got the clear answer for it. So let's read. The question is, a person is moving 20 meter west, then turns 40 meter right and 20 meter towards south. So हमें find क्या करना है? Find the final position of the person in the following examples. Okay, तो पहला example है 20 meter west, then turns 40 meter right. तो start कर लेते हैं, solution देख लेते हैं कैसे solve करना है. So सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर वन फिगर बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. जैसे मैंने बताया, फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो 20 मीटर वेस्ट की तरफ गया. सो फर्स्ट थिंग इज 20 मीटर वेस्ट. तो लेट्स से हमने ये ड्रॉ कर दिया, वेस्ट की तरफ 20 मीटर मूवमेंट हुआ. देन अभी ये वेस्ट की तरफ है, तो आप फील करो इसे. कैसे फील करो कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस एरो एंड यू विल फील योर राइट हैंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस साइड. So in this part, then turns 40 meter right and 20 meter towards south. So देखो कैसे दिया हुआ है, 40 मीटर पहले राइट, मतलब 40 मीटर गया राइट साइड मतलब ये नॉर्थ की तरफ 40 मीटर. अब क्वेश्चन ये कि अब फिर रिटर्न आ रहा है 20 मीटर साउथ. तो अब आ गया 20 मीटर साउथ मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी. मैंने बताया ना, हमेशा रेफरेंस इस तरीके से लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो ये आ गया फाइनली कुछ यहाँ पर. नाउ वी कैन सी द फाइनल पोजीशन विल बी दिस वन इज द फाइनल पोजीशन. अब कैसे देखना है, ट्रायंगल बनाने का ट्राई करना है, पाइथागोरस ट्रायंगल. सो आई कैन सी दिस इज 20 and 20 minus 20 will remain this 20. So the final position is the diagonal of this part. तो द फाइनल पोजीशन विल बी डायगोनल. कैसे निकालते हैं पाइथागोरस में? सो पाइथागोरस में अगर हमें पोजीशन निकालनी है, पोजीशन, और हमें ये पता चल गई, इट विल बी रूट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज 20 का स्क्वायर एंड दिस इज 20 स्क्वायर. एंड इसे सॉल्व करना मैंने कल भी बताया था कि बेस्ट क्या है, ट्राई टू टेक सर्टेन कॉमन्स. लाइक if both the things are same, it is something like x square plus x square. What will happen, x, if we add x square and x square, we'll get 2x squares. Done. So from the x square, the x will come out and 2 will remain inside. So in that part, we can just write this as 2 times of 20 squares, because दो 20 के square है यहाँ पर, and from 20 square 20 will come outside and root 2 will remain. So this will be our answer for the final position. If you wish, you can multiply the root 2 value also. So I already told and I asked everyone to remember these values. The value was 1.414. You can take up to 3 digit or 2 digit is also enough. So you multiply it and you will get the answer. So it will be 2.828 and 28 actually. So ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा 28 मीटर. एंड डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट हम बता सकते हैं डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, इस पॉइंट से इसको देखने का ट्राई करना है हमें, किस तरफ जा रहा है. इफ आई ड्रॉ इट कंप्लीटली, इट इज सम डायरेक्शन, दिस वन इज नॉर्थ एंड दिस वन इज वेस्ट. So the direction is some sort of like northwest. So northwest direction आप जस्ट लिख सकते हैं NW. ओके, तो ये हमारा हो गया वैल्यू एंड डायरेक्शन. तो अभी बताया किसी को कोई डिफरेंट आंसर आया हो या कोई डाउट हो? No, sir. ओके, so most of means all of you have got the same answer. Yes, sir. Awesome.
Okay, good, great. So that's very good that all of you have got the correct answer. Let's solve for the second one. Let's see the second one. So in the second one, the question was a bit more complex. A person was moving 10 meter east, then 40 meter north. So let's solve 10 meter east and 40 meter north. So start solving. This is a, let's say, start point. It will go 10 meter east. So this is 10 meter east. Then towards the north. So it will go like up to 40 meter north. So it is somehow 40 meter north. Let's see the question again. So 10 meter east, 40 meter north, then turns left. So if a person is moving north, left turn होगा मतलब west की तरफ. So then turn left for next 30 meter. So that means अगर north की तरफ जा रहा है और अब अगर उसने left लिया, so left मतलब हो जाएगा अब ये वाली direction. So left कितना गया वो 30 meter again. So left is 30 meter. Then what's the situation? And moves straight for 20 meter and then again moves left for 20 meter. तो दो 20 मीटर के सेट और कंप्लीट करने हैं. कैसे? एक 20 मीटर कंप्लीट, एक 30 मीटर कंप्लीट हुआ, फिर एक 20 मीटर जाएगा स्ट्रेट. तो ये हो गया 20 मीटर मोर. देन उसके बाद फिर से एक लेफ्ट लेगा. कितना? 20 मीटर्स का लेफ्ट होगा. सो एज यू कैन सी दिस इज द 20 मीटर अगेन अ लेफ्ट. सो this will move again 20 meter left. So let's say downward आ जाएगा 20 meter, because if someone is moving west तो left क्या हो जाएगा? South की तरफ point करेगा. So now we have got the final position. It is somewhere this way. Now logic is to make a triangle. So I'll try to make a triangle, right angle triangle from this. So in the right angle triangle, let's see, this one is 10 and this total was 30. So how much it will remain? This will be 20. 20. Is also left side. So all this length will be 40 meter. 40. Yes. Yeah. And this is 20. So I can see the final position as, Pythagoras, yes. yeah. So we can use just the Pythagoras format here and we can write the final position as 40 square plus 20 square. Plus 20 square. Then again, always take you to, like, you must take the common, certain things common. So let's say 20 and 40. So we can take the common as 20. So I'll take the common 20 square. So 20 square, then this is the 40, which you can write 2 into 20. That means here it will be 2, but there is a square of this one and this will be 1 square. So that's how you can take the common. Common बहुत important है. Common is something like, देखें example, suppose लिखा हुआ है √3x square plus let's say x to the power 4. So what you can do, you can see, you can take common of x square. So you can take common of x square. This will be 3 plus x square. Square plus 3x plus x square. Okay. Good. So this x square will come outside. So that's how we can take common. So in these two figures, we can easily see the common is 20. So we have taken the 20 as a common. So we'll see 20 will come outside and what will remain? Root of 2 square is 4 and the 1 is 5. So total will be 20 root 5. Okay. So you can use the value of root 5. That will be our answer. तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन, किसी को डाउट है? 20 root 5 is the final answer. किसी No, को? sir. Okay. No, Great. sir. Very good. No, sir. So that's good. I think most of you Sir, solved. third one. Third one, yeah. Third one was a starred question. I made a star up to this question because this is a technical one, जिसमें आपको एक logic लगाना था, जिससे हमने एक hint भी दिया हुआ था. So I just want to know, does someone have solved, like, does someone came to a particular conclusion? If someone has a particular answer, you. So does someone came to a conclusion, answer for this question, third part? Let's see whether it's correct or not. Does someone have any answer for this question? I have given a hint now. So based on hint, you could use this hint. किसी को पक्का, किसी को भी आइडिया नहीं लग रहा है? Using the hint, you could have solved this question, I guess. Viraj, have you came to any conclusion for this question?
No, sir, I could not. Okay, let's see. So let's see. I'll just give again, I'll elaborate my hint and you people only solve, okay? Let's see. Okay, I'll just elaborate my hint. Read the question, let's see. A person is moving 50 meter towards northeast direction. So this is a simple one. Then moves 40 meter west and this much of south. So different direction है. This direction is important. Northeast. इसका मतलब ये होता है it is in between the north and east. Clear? So this means is it is at 45 degree. That's why I've given an example of 45 degree. That listen everyone, you need to draw like this considering the 45 direction. And the hint is, if you have a triangle, remember, if you are drawing a triangle and you know this distance x and this angle is 45, you can find these values, this perpendicular and this base. See, then the perpendicular will be x upon root 2. Clear? Or you can also write it x by 2 into root 2. And you can similarly find the base also. So I need first everyone to draw the figure. Just first try to draw the figure, then try to find the perpendicular and base for this value. And then we'll guess. So give us few minutes. What? Okay. Okay, just I'll give few minutes. Let's see. The first important part is to draw a proper figure and use this hint. Use this hint to find two things. The one perpendicular, which is this one, I'll say this perpendicular try to find, and the secondly try to find the base. So this one is the base. These two things you can find. This will help to use in Pythagoras theorem.
Okay, I guess by now it should have solved properly, I guess. Okay, let's see. Whoever has got the answer, it's okay. Or it's better to see. It's better to let's discuss the solution. Okay. Okay. Look, everyone. So let's discuss the third question as we are starting. Okay, everyone. Now focus on the screen. Let's see. We are starting from a particular point, but the first thing is given that we are not moving to a certain direction, east, west, north, like that. We are moving at an angle towards the northeast direction. So the first part is we are moving like 50 meters towards the northeast direction. And if nothing is given, that means the angle is 45 degrees. Done. This was the first part. Then the second part was it moved 40 meter towards the west. So from here, it doesn't matter where is it, like face is. No, then it's not correct answer. Let's see. Now everyone focus on the screen. Okay. So let's see. It is moving 40 meter west. So it is somewhere moving 40 meter west. Done. Then it went to a distance towards south, certain distance, that is 25 root 2. We do not know this actual length. Okay, so we do not know the figure till now. We don't know the figure, but as I already gave a hint here that if a distance is a diagonal of a 45 angle, you can find the perpendicular by using x by root 2, or you can use x by 2 into root 2. So this was the hint for this particular question. Because why I have given this sort of hint? Usually we use sine theta and cos theta here. What we use, these are the mathematical operator, sine theta and cos theta. Usually you study in at the end of class 8th. So that's why I did not use these operators. These are mathematical operators like plus, multiply. These you know. Plus, how to multiply. So similarly, these are mathematical operators called sine theta, cos theta. By them you can solve it. But as some of you are unaware of these, and at the end of class 8th, these are like taught to you. So the best thing will be to use the hint. So hint was if you are making a triangle from this one. So let's make a perpendicular triangle, right angle triangle. So what is the logic now? If this is x, this can be x into root 2 by 2. This, I can write it like this. So I can write it 50 into root 2 by 2. So how much it is? It is 25 root 2. This perpendicular. And same with this base. This will also be 25. Let's say I'll write the whole value 50 by root 2 by 2. And this I'll write 25 root 2. So all these two values are 25 root 2. Because you have already found this value 25 root 2, you can simply state that whatever height is this will carry the same height. Okay, so from this value we can easily state that this is not 25 root 2. 25 root 2 is only up to this point. Done. So now the answer is very clear. You don't need to use the Pythagoras format. This is the final position. Clear? This is final position. तो इसमें हमें क्या करना पड़ा है? हमें इसमें यहाँ पे खुद ही पाइथागोरस हमें यूज करना पड़ा है फाइनल पोजीशन के लिए. तो देखिए फाइनल पोजीशन कितनी हो जाएगी, बहुत ही क्लियर है. ये टोटल कितनी है 40, उससे माइनस कितनी करनी है 25 रूट 2. सो टोटल माइनस करनी है 40 से 25 रूट 2 माइनस कर देनी है. सो दिस मच डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या है? वेस्ट. सो द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स वेस्ट. तो ये हमारी फाइनल पोजीशन है. सो आंसर यार अभी जस्ट सॉल्व कर सकते हैं आप. 40 माइनस 25 इंटू 1.41. ओके, और जस्ट आप ऐसा भी लिख सकते हैं, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 40 माइनस ओके. तो हम ये कर सकते हैं, और मैंने जस्ट 2 डिजिट लिए, आप 3 डिजिट भी लेके कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है वैसा कुछ. लेट्स से अप्रॉक्सीमेट जो हमारा आंसर आएगा, इट विल बी समवेयर 4.75 मीटर.
मम्मी से वाला ओके, तो मम्मी से ये चीज हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो किसी का आंसर नियर अबाउट दिस आया है क्या? एनी स्टूडेंट हैड गॉट दिस सॉर्ट ऑफ सॉल्विंग? किसी ने बिल्कुल ऐसा सॉल्व किया? डजंट मैटर कि आप फाइनल आंसर तक पहुंचे या नहीं, बट समहाउ दिस सॉर्ट ऑफ आइडिया किसी को था? Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे लगता है फिर अच्छा है, काफ़ी आप लोग को अच्छे से आइडिया लग गया होगा। ओके गुड। तो एग्जैक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, जस्ट हमने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया हुआ है। ओके, सो ये पार्ट था जो हमने लास्ट होमवर्क दिया हुआ था और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पर्टिकुलर टॉपिक, कंटिन्यू करते हैं। हमने पोजीशन तक स्टार्ट कर लिया है और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज स्पीड and velocity. Okay, so the second part is apart after the distance and displacement we have these two things, speed and velocity. Okay Viraj, you have any doubt? Yes, sir. Actually, it is not related to speed and velocity. Okay, So it was actually about a vernier caliper. I found okay, it at my home. okay, It is a metric vernier caliper. I'll okay, put on the camera and show you. okay, yeah, you can show it, you can turn it on. Yes, one sec. Let's see, it's this one if you can see. Yeah, that's the And exact vernier one. Yeah, yes, and it has markings like which exceed only 1 to 10. So it has markings in between, and it says it is 0.02 here. yeah, Near the 9 mark, it says 0.02. 0.02, yeah, So, I can see. yeah, what does that mean, sir? Actually the point is these are in both format. The upper format is for the inches. Okay, Okay. so as you see Yes. in the normal scale, the normal metric scale you use in like your schools, that scale also has these two parameters, these two features. The first one is like metric one जो centimeters में है, and the second one is related to inches. Yes. Okay, so this Sir, is sort of that. and what does this 0.02 mean? It measures a little more, right, in precision? Yeah, actually it will increase the precision, will depend how much column of vernier are matching to the main scale. Means first you check 0 to 10. In 0 to 10 of main scale, how much of bottom one are matching. So you will see up to 2 it is matching, na? Yes, yes. Okay, so that's how When we I took measurements, also it matches up to 2. yeah exactly. So what they have done, this is a more like this is not that precise uh, vernier. What it does actually, it adds up something like, see, look at the screen, suppose we have certain numbers of these sort. Okay, so if a vernier is matches to up to a certain point, as I told, we need to find the least count. So what least count does, we find one main scale division and we subtract it with the one vernier scale division. ये जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों को सॉल्व करके, दैट वैल्यू इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। तो इसमें क्या है, इसके जो वर्नियर डिवीजन है वो बड़े हैं, थोड़े लार्जर है वर्नियर डिवीजन, इसलिए इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो स्टैंडर्ड वर्नियर से थोड़ा सा कम है। ओके, Okay. और दूसरी स्केल जो है वो इंचेस के लिए है, समझ Yes. रहे हैं आप, इंचेस के लिए, तो वो हमें यूज करने की जरूरत नहीं होती है, हम मीट्रिक वाला ही यूज करते हैं। यूजुअली सारे स्केल में ऐसा होता है, एक बॉटम पे मीट्रिक मतलब सेंटीमीटर वाले और अपर साइड पे इंचेस वाले होते हैं। ओके, तो Yes. ये जो वर्नियर इसका लीस्ट काउंट कम है, इसका लीस्ट काउंट 0.2 रहेगा। Sir, no, it's 0.02, sir, here. या सॉरी, एग्जैक्टली 0.02। Okay. So, Okay. sir, while reading this, then how to take these readings? Similarly, as we told, like there was a problem like in the least count we must know, and I gave you a formula for that. Suppose to take the reading, what we do, what was the actual formula we discussed? Let's see if we have that in here. Let's see. So the
actual relation is, you need to take the main scale reading, then vernier scale reading, and multiply it with the least count. Okay, so in our case the least count was 0.01 centimeter. Done. But Yes. as this vernier, it is not that precise, so it is measuring 0.02. So now you need to take the reading. For reading, you can just write main scale reading plus vernier scale reading into least count. And your least count, in our case it was 0.01 centimeter, तो हम directly second digit रख देते थे, but in your case it is 0.02 centimeter. So while solving, what you can do, suppose आपका main scale reading है 4.3, done, plus Yes. vernier scale reading है, it is 8. So what you will be doing, you will be multiplying it with 0.02. Okay, done. Okay. So that's what we do है. अगर 0.01 होता ये, so ये directly multiply हो जाता, आंसर क्या आ जाता, 4.38 आ जाता. हाँ. If it was 0.01, but as it is 0.02, so it will be 4.46. Okay, so this will be the reading. So we need to multiply with the least count. Least count उसमें लिखा होगा. Okay. Okay. So, sir, and also that, so, sir, what if two lines align? Means sometimes I saw that like 8 and then a smaller line in front also The first one, aligns. the nearest one is used. The first one to the 0 is used. Of course, this setup is repetitive one. Actually, this I don't know means which sort of vernier it is, but this vernier contains a lot of readings. Usually in regular vernier it doesn't happen. Usually we have only up to 10 readings. Done. But it has the columns within 10 also. It has 5 columns in each centimeter. Done. So the problem with that Yes. is each time it will repeat, means 0 to 1, means up to 0 to 2, it will again repeat. Means what you will observe, somewhere 0 to 2 it will match, then again 2 to 4 it will match, then 4 to 6 it will match. So in the each two difference it will again match. Yes. So, sir, what Okay. to do that time? No, the first one is taken as the reading. Okay. Okay. Just Okay. nearest to the 0 one is used. That's why not to be confused with this one, that's why the nowadays vernier are having only up to 10 reading, like 0 to 10 straight columns. Okay, so you won't be confused a lot of times, but here as it is 0.02, so after two reading again it will repeat itself, so you need to take the first ones only. Yes. Okay, So, sir, I also found this thing. This is a this screw one is gauge, just, yeah, screw and gauge. this has a 0.01. 0.01, so this one is a standard one, because in standard Yes. one also we measure 0.01 mm, or we can write it 0.001 centimeter also. Okay, so it's better everyone can see it. Sir, I can take measurement with this also, and it has a mini lock Yeah, here. yeah, that lock is used so that the slip, it will not slip again and again when you something, when you tie something, so that it can stop at that point also, so loose नहीं हो, इसलिए हम वहाँ पे वो screw use करते हैं to tight it up. Yes, and sir, it has some kind of wrench which you can turn like this, and it Yes, yeah, makes a clicking sound exactly. like This this. ratchet is used. Yeah, the use of this ratchet I'll tell. See, the use of ratchet, what it is, I'll explain. The problem with this is, let's see if you also see the my shared screen. If you see, if you press anything in between, and if you press it hard, the thinner thing will compress by some amount. The problem is, suppose this is a wire, and if some student is compressing it too hard, so this thing will Okay. compress a bit now. So to that, what is actually done, we do not rotate this part, we rotate this ratchet. So when it will start making a kinking sound, it means it has been perfectly tight. You do not need to compress it more. Okay. Okay. Hmm. Yes, sir. Thank you for Okay. clearing my doubt. Okay, good, great. Okay, so it's better here, everyone must go through these. It's better to get a physical feeling of these instrument. If someone have these instrument, it's better to get a precise reading of
a lot of things. If you want to measure your book precisely, you can use these things. Okay, so let's see Yes. now. Sir, Now, just one last thing. yeah, So, sir, while measuring, we have to take the line behind the main scale, right? line behind the, Main scale. yeah, lined just behind the main scale. Okay. Yeah. Thank you, Okay, sir. okay, good. So now let's see. Does someone have any doubt regarding this third question? Let's read it out again. The person was moving this much northeast, then moves 40-meter west and this much of south. So the question is clear. As per the same, I have solved it. किसी को कुछ doubt है तन्या? You have any doubt? You can ask. Sir, I have written in the chat box. Yeah, I have seen that, but that is not clear to me. Means, Sir, uh, it says that if we are moving northeast first, but then the west of northeast would not be where you have exactly. Okay. Let's clear it out. देखो, most of everyone are focus. This is a common doubt in the last lecture also. Tanya, you attended my previous lecture, na? Yes, Have sir. have you attended? Yeah. In that also I cleared it out that what is relative. Relative term is left and right. Everyone be focused there. The relative term are left and right means they depend upon where you are moving. The left and right depend upon where you are moving, but the two things which are our reference direction, east, west, north, south, they do not depend where you are moving. Means suppose a person is moving east, तो क्या नॉर्थ बदल जाएगा क्या उसके लिए? नहीं. अगर ऐसे नॉर्थ बदलने लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना. कोई सपोज कहीं पे भी जा रहा है तो लेफ्ट वाले को हमेशा थोड़े ना नॉर्थ बोलेगा. जैसे अभी ईस्ट जा रहा है तो लेफ्ट तरफ क्या है? नॉर्थ. अब आप बोलोगे नहीं सर अभी वो साउथ जा रहा है तो क्या होगा? तब लेफ्ट में क्या आएगा? तो साउथ जा रहा है तो यू ट्राई टू फील दैट यू आर मूविंग साउथ, देन योर लेफ्ट विल बी टुवर्ड्स ईस्ट. So left and right are relative, but east and west are not relative. Means suppose if you are moving in this direction, you cannot say, see, you will not say that this east west will be as per this. Don't feel like now the west will be this arrow. What I am writing, I am drawing here. Okay, sir. This arrow will not be west. This is a common question, this is a common doubt, but the east west south they will never change direction. Agar west is taraf hai, so the west will be this side only. Okay, so left and right can change. If I say left, then this red color is correct. The direction which I drawn with the red color, this is correct while we are using left direction. But if I am stating west, that means strictly west होना चाहिए. Okay, still have doubt, Tanay? Understood, Okay, sir. good. Yeah, Viraj, you have doubt? I forgot to unraise my hand or lower hand. Okay, Yeah. it's okay. Yeah, so I guess it's clear by now. ये बहुत ही कॉमन है. ईस्ट वेस्ट साउथ विल नेवर चेंज. इट डजंट मैटर यू आर मूविंग दिस डायरेक्शन. इफ आई से वेस्ट, सो यू डू नॉट लुक लाइक कि सर अभी जा तो ऐसे रहे हैं, अभी वेस्ट तो ये वाली डायरेक्शन होगा. नो, दीज आर लेफ्ट राइट. These direction are left right, not east west. East west will never change. They will remain as it is. ये east है, ये west है, ये north है, ये south है. They will not change. That's why they are called reference. Okay, let's see. Now, this one is a new topic, speed and velocity. तो बहुत यार आप लोग बहुत सुनते हैं. Speed is very familiar to everyone. Speed और velocity क्या है? हम दोनों को separately लिख लेते हैं. दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं इसलिए हम उनको साथ में भी लिखे हैं. बात करते हैं पहले स्पीड के बारे में, देन विल डिस्कस द वेलोसिटी. बात करते हैं स्पीड को पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो अच्छी बात यह है कि स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से. क्लियर? बट अगर स्मॉल v के ऊपर ऐसे एरो लगा दिया है देन दिस बिकम्स वेलोसिटी.
व्हाट इट एक्चुअली मीन, लास्ट क्लास में मैंने बताया था दैट this arrow represents a vector. Okay. Okay, in the previous lecture I told you about the scalar and vector. So the first thing is speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. so that's why we used the arrow above this velocity. But now the one thing is, when actually direction matters, let's see this is a, let's see this is B, and if a person is moving like something reaching to point B, suppose, and if a person is moving straight to the B, it is headed straight to the B. So what will happen if you are moving in one direction only? So if you are moving one direction, what you will feel that the distance and displacement are same. There is no difference in distance and displacement. That means there is no use of direction. There is no use of it. So in that case, if I see how the speed and velocities are defined, they are defined like speed is equal to distance upon time, and the velocity is defined as velocity, it is displacement upon time. So displacement upon time. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट अगर वो सेम हो गई तो फिर इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम होगा. तो अगर मोशन इन वन डायरेक्शन है, रिमेंबर इन वन डायरेक्शनल मोशन, ठीक है, वन डायरेक्शनल मोशन क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी. मतलब हम दोनों को कैसे भी लिख सकते हैं, सिंपल v भी लिख सकते हैं. तो आप बहुत बार देखोगे वी डू नॉट यूज दिस v टू एरो. v एरो मतलब क्या बोलते हैं, वेक्टर v, और वेलोसिटी वी डू नॉट यूज वेलोसिटी टर्म so often. Why? Because usually we discuss one directional motion. So this one is a one directional motion, so in that the speed and velocity will be same. ये हमारा लॉजिक था. अगर हम इस मोशन पे बात करें so speed is not equal to velocity, ये चेंज होगा because distance and displacement will change. Okay, अब बात करते हैं एक्चुअल डेफिनेशन में कि यार स्पीड है क्या. तो फिजिक्स में कभी भी टाइम का डिवाइड होता है. सपोज x डिवाइडेड बाय टाइम, तो जो टाइम का डिवाइड फिजिक्स में जिस भी चीज को बोलते हैं उसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसका मतलब क्या होता है कि यू आर ऑब्जर्विंग इट्स रेट. रेट का मतलब यहाँ पे प्राइस बिल्कुल नहीं है, ठीक है. यहाँ पे रेट का मतलब है चेंज. टाइम के साथ जो चीजें चेंज होती है उसको बोलते हैं हम रेट. लाइक अगर मैं बोलूं व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ, तो रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है कि टाइम के साथ ग्रोथ कितनी हो रही है. रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब ये नहीं होगा कि कुछ अपार्ट फ्रॉम द टाइम कि आज एक बॉक्स है फिर थोड़ी देर में कितने बॉक्सेस होंगे, नहीं. टाइम के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे 1 आवर में कितने बॉक्सेस हैं, 2 आवर में कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, लाइक दैट. तो अगर हम बात करें कि कभी भी कोई चीज अगर टाइम से डिवाइड होती है फॉर्मूला, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड द रेट. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेफिनेशन स्पीड की, द रेट ऑफ चेंज और द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड स्पीड. तो ये एक डेफिनेशन हो गई, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड. सो अभी सबको समझ आएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड. अच्छा, इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी है. फिजिक्स में कोई भी चीज अगर डिवाइड है, लेट्स से x इज इक्वल टू है b बाई ए, तो अगर मैं कर दूं इफ a इज इक्वल टू 1, लेट्स से मैं a की वैल्यू रख दूं 1, सो x विल बिकम b. It's very clear. Excuse me, sir. Yeah. Sir, so shouldn't it be speed is the rate of distance covered with respect to time? No. The rate itself means with respect to time.
Okay. In physics, the rate itself means it is with respect to time. Clear? If I want to write something else, I will write the second thing कि if I make a time unit, suppose physics में x is equal to a by b, and if we keep value b as 1, what it will be, x will be a. ठीक है, तो अगर हम टाइम को 1 रख दें, सो डिस्टेंस ही क्या बन जाएगी हमारी, स्पीड. इसका मतलब ये है, आई कैन सिंपली से द डिस्टेंस कवर्ड in unit time, unit means 1, in unit time is called speed, and with this one the displacement covered in unit time is called velocity. So these are the basic definition which are used in schools. Okay, तो अगर आपके स्कूल में कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, the rate of distance covered is called speed, or the distance covered in unit time is called speed, and velocity का क्या हो जाएगा, displacement यूज करेंगे. तो ये चीज़ हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पर. अब इन दोनों के यूनिट्स भी हमें याद होने चाहिए. देखो यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर. ओके, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड. सो क्या यूनिट हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होगा, मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड. सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड का यूनिट इट विल बी मीटर पर सेकंड. इस तरीके से हम लिख सकते हैं यूनिट. वेलोसिटी का भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड. तो यार ये सबको क्लियर है ना, यूनिट्स क्या होते हैं, हमने मेजरमेंट्स में डिस्कस किया था. सो स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड. इस तरीके से हम स्पीड या वेलोसिटी निकाल सकते हैं. तो अभी किसी को स्पीड या वेलोसिटी में डाउट है क्या चीज़ें हैं दोनों, अगर दोनों एक लाइन में मूव हो रहे हैं तो दोनों सेम होंगे, अगर डिफरेंट पाथ पे जा रहे हैं तो डिफरेंट हो सकते हैं. डिफाइन किस तरीके से, डिस्टेंस अपॉन टाइम से या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से. दोनों की डेफिनेशन क्लियर है. द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड स्पीड, और द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. तो थोड़ा सा एक लॉजिकल एग्जांपल के साथ हम इसे फील करेंगे, बेटर रहेगा. ओके, सो लेट्स सी इसे किस तरीके से हम देखें. एन ऑब्जेक्ट, लेट्स सी एवरीवन, एन ऑब्जेक्ट कवर्स, so an object covers 20 meter each seconds. Then what is its speed, बताएं क्या स्पीड हो जाएगी, 20 meters per second. meter per second. Very good. So the answer of speed will be, it is directly, because the time used is 1 second. Note everyone, the time used is each second. So the answer will be very straightforward. It will be 20 meter per second. Done. Let's see another example. So let's see, an object covers 500 meter each minute. Then find its speed. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा बताएं. 500 meters per second. No, now it's not correct. Focus everyone na. 500 minutes. Yeah, it covers 500 meter each minute. So it is something like this. So now it should be very clear to everyone what it is. It is 500 meter not per second, it is 500 meter per minute. Clear? But now the problem is this is not a standard answer. If you are solving it in school, you can write it 500 meter per second, not a problem. But if you are solving an objective question, so there you won't find any option in meter per minute. Then what you will do? You will need to change it as per the question. So I want
the answer in meter per second. So I'll write here, find its speed in meter per second. Now I want the answer. Let's see what should be modified now. What should be done here? It is quite thoughtful. We need to convert our minute Sir, into what? Yeah, 8.3. yeah, very good. We need to convert our So, minute into seconds. so my answer came 8.34. It doesn't matter. It's a recurring sort of division, so you won't get a Sir, perfect one. 8.3. It's okay. 8 point something is enough, not a problem. बहुत ही simple है. We need to convert minute into second. So let's see. It is 500 meter is okay. Upon, look everyone, upon minute. But we need to convert this minute into what second? So as we know, 1 minute is how much second? There are 60 seconds. So by that, what we can do, that this minute we can write 60 seconds, because if there is nothing given, we can consider 1 always, na? We can consider 1. So we will write 1 as 60 minute. Now if we solve this, we'll get the value of how much it is. It will be 25 by 3 meter per second. You can write just like this also, or you can divide also. So it will be 8.33 something. ओके, सो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, आप समझे। तो पॉइंट यहाँ पर ये था कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि यूनिट किस टाइप पे गिवन है, स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट है, एक है मीटर पर सेकंड और एक है जो आप कार्स में यूज करते हैं। किसी को पता है कार में या बाइक में जो यूनिट यूज होता है स्पीड का, क्या यूनिट होता है? किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, किलोमीटर पर आवर। So let's see one more question based on that only. Let's solve. Fine. Okay, solve. We have to find answer in kilometer per hour or meter per In second. kilometer per hour. In kilometer per hour. Because let's see, in kilometer per hour. So 62.5 kilometer per hour. Yeah, very good. So it's very clear. It's quite clear. Speed is equal to how much it is, 250 divided by 4. This is kilometer, this is hour. We don't need to convert it because the question is asked about this only. तो यहाँ से हम easily solve कर सकते हैं, and the answer will be 62.5 किलोमीटर पर hour. Now, क्या इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट या कुछ समथिंग कुछ डिफरेंट लग रहा है क्या? कुछ something odd about this question? Sir, it is constructed in a different way. Okay, or something else which you find odd here? Whatever odd if you see, apart from the handwriting, if you see something odd in this question. The units. Okay, no, we have talked about the unit. Yeah. So the uniform motion, because the bike will not move in 62.5 Exactly. kilometer per hour. Exactly. That is the observation. Very good. So what this question I am asking to get an idea from you. What is that idea? That from this value you can see the bike is moving constantly with this speed, which is not possible. For a bike to move with the same speed is not possible. It is moving constant. Moving constant. Logically, that is not possible. So logically, that's not
पॉसिबल। तो फिर व्हाट इट इज एक्चुअली, व्हाट इट इज, बिकॉज क्वेश्चन तो करेक्ट है, एक बाइक राइडर था और वो 4 आवर में पुणे पहुंच गया। ओके, तो क्या वो पूरा टाइम 62.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से था? नहीं। तो दैट मीन्स ये आंसर तो गलत होगा ना, मतलब कुछ लॉजिकल मिस्टेक है यहाँ पर। कोई बताएगा, एक्सप्लेन करे व्हाट इज दैट लॉजिकल टर्म जो मतलब मिसिंग है यहाँ पर? Sir, we have to find the average. Okay, let's hear it out one by one. Yeah, Dhruv, you answer. So I think so that this is the average. Okay, let's see someone else. Sir, average speed. Okay, what is average speed? What do you mean by average speed here? What is the relation here? Sir, it is where you take all the values of speed that he went or traveled with, and then you divide it by the number of values, then we get the average. Okay. Sir, total distance upon total time. Okay, so you are giving the formula. Everyone is talking about the formula. What is the formula for average speed? I am not bothering about that. I Sir. want to know the feeling. What is missing here? Average speed in 1 hour. Okay, average speed in 1 hour? No. Okay, let's see. Okay, सर वो बीच में किधर तो रुका होगा। हाँ ठीक है, वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, listen everyone, let me explain. So what is actually happening here, we do not know the process, we know nothing about the process, how he is moving. There can be infinite possibilities, like suppose for some period, suppose infinite possibilities are there. I'll write up, suppose it is moving like 70 kilometer per hour for some time, then like he got bored or there was a lot of traffic, so it moved with like 50 kilometer per hour speed. Then again there was more traffic, then it moved for like 40 kilometer per hour speed for certain time, I don't know what is that time. Then again he got the open way and it was moving with like 100 kilometer per hour. Then again there was traffic and let's see it is moving with 60 kilometer per hour. So there can be infinite possibilities. So there can be infinite possibilities of his speed. स्पीड के बारे में अगर मैं पूछ रहा हूँ, स्पीड, अगर स्पीड के बारे में हम पूछेंगे तो देयर कैन बी इनफाइनाइट आंसर्स, इनफाइनाइट आंसर्स. So what actually? Sir, but velocity will be the same, like single. No. Even that will not be same because it is moving in a straight line. Now I am considering it is moving in a straight line. So there is no difference regarding the speed or velocity. Okay. So don't bother about the speed or velocity when it is moving in straight line. So what is actually the problem? Let's see. For the speed there will be many answers, but if I see what is the actual average speed for this particular scenario, average speed I am asking. So if I ask average speed, so it is very simple. All you need to do is to see when and where it reached. So average speed belongs to certain things कि suppose किसी क्लास में एक let's say क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, कुछ स्टूडेंट्स को 10 मार्क्स आया, कुछ स्टूडेंट को 20 मार्क्स आया, कुछ को 100 मार्क्स भी आ गया. तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ क्लास? हम एवरेज निकालते हैं टोटल स्टूडेंट्स, मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं सारे स्टूडेंट्स के मिला के डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ऐसा करने से हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू. एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है? एवरेज वैल्यू का बिल्कुल सिंपल फीलिंग ये है, if he will keep on moving with this speed, he will reach Pune in 4 hours, just in 4 hours. If he do not change his speed. Average speed का मतलब ये है, मतलब कभी ये थोड़ा कम रहा होगा, let's say 50 है, तो बैलेंस करने के लिए कभी इसकी स्पीड 80 भी रही होगी. क्लियर? तो ये जो स्पीड का आंसर है ये क्या है? एवरेज स्पीड है. ओके, तो ये जो हमने पढ़ी है ये क्या है? ये एक एवरेज स्पीड है. तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी ने बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज इज स्पीड, क्वेश्चन ही उसका गलत है. समझ आया? उसका क्वेश्चन रॉन्ग है क्योंकि स्पीड के आंसर देयर विल बी इनफाइनाइट. व्हाट ही मस्ट आस्क अबाउट द एवरेज स्पीड, देन इट विल बी करेक्ट.
ओके, तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा था दो नए वर्ड्स, वो नए वर्ड्स हैं एवरेज एंड ओके, तो वो दो वर्ड है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, मैं अभी बता रहा हूँ, आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट दोस, आई एम कंसिडरिंग दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें दो वर्ड होते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम स्पैन, ये एक टाइम स्पैन के लिए वैलिड है, डन, जो एवरेज है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब ये है कि कुछ ऐसा कि स्पीड स्पीड फ्रॉम, यहाँ पे देखेंगे आई एम गिविंग इट एज एन एग्जांपल, स्पीड फ्रॉम पुणे टू कोल्हापुर, या लेट्स से फ्रॉम कोल्हापुर टू पुणे, तो it is a long span, it is a long span, that means it will be not called just the speed, it is average speed, average speed. But if someone is asking its speed or with which speed it crossed a certain city, like it crossed Karad, so it's like with which speed it crossed Karad. Okay, so with whatever its speed it crossed Karad, that speed will be called instantaneous speed. तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो कभी भी आपसे जो पूछेगा वो एवरेज स्पीड पूछेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, मतलब आपको लोकेशन बता देगा कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो कहाँ पे था, दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर बोलेगा इन 2 सेकेंड्स कितना होगा, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। सो आई विल से, लेट्स से एक और एग्जांपल बताएंगे, स्पीड इन फर्स्ट let's say 10 seconds, that is called average speed। अगर पूछा हुआ स्पीड इन फर्स्ट सेकेंड 10 seconds, that is the average speed for 10 seconds। लेकिन अगर पूछा हुआ है स्पीड at 10th second, that means that is an instantaneous speed। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। अब हम इन दोनों के फॉर्मूले पढ़ लेते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस। पहले ये बताओ, किसी को डाउट है इस चीज में, एवरेज स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? नो सर। ओके गुड, तो मुझे लगता है क्लियर एकदम। इंस्टेंटेनियस मींस एट अ इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट, और एवरेज मतलब एक टाइम स्पैन दे देगा आपको कि लाइक इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड कितना होगा, जबकि आपको इंस्टेंटेनियस में पूछेगा एट 10 सेकेंड कितना होगा। ओके लेट्स सी फॉर्मूला अगर हम बात कर लेते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड जब हमें निकालनी होती है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर, वी राइट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मीन्स टोटल कितना ट्रेवल किया अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, ये क्वेश्चन है। ओके ये हुआ एवरेज स्पीड। इसे लिखते कैसे, इसे सिंपल यहाँ पर AVG लिख सकते हैं, स्मॉल AVG का मतलब हो जाएगा एवरेज। किसी बुक्स में कोई डिफरेंट सिंबल भी यूज कर सकता है, तो एक सिंबल होता है, इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं V। अगर ऐसे ब्रैकेट बने हुए इसका मतलब ये क्या है, ये है V एवरेज। तो क्या आंसर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन था कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एवरेज स्पीड को। डन। अगर एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है तो फिर वेलोसिटी का भी कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है, वेलोसिटी भी स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी अगर बात करें हम, एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। v अब हम क्या लिखेंगे? एवरेज के ऊपर एरो लगा देंगे। ओके, तो इसे सॉरी, दो में से एक चीज हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो एरो लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं क्या? एवरेज डिस्टेंस या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये तो प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। बट अगर हम बात करें किसका, इंस्टेंटेनियस स्पीड का, कैसे निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला यार हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, क्लियर। इसका फॉर्मूला हम क्लास 8th में नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए इस फॉर्मूले में आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मैं जस्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, बट आप बिल्कुल इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचें। v इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला होता है, v इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी एस अपॉन डी टी। ओके, तो ये इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है। ये अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लास 9th में हम इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अभी आपको विदाउट फॉर्मूले भी आप आंसर कर सकते हैं, अगर आपको एग्जाम्पल उस तरीके से दिया हुआ है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या होता है। ओके, तो मुझे नहीं लगता अभी किसी को एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा कि एवरेज स्पीड किस तरीके से निकाल सकते हैं। Sir, या DS means distance. Yeah, S stands for distance here. This S stands for distance and T stands for time. Now, Okay. okay, what you do not need to bother about is this D. This is something a mathematical operator. Okay, so this D by D is a mathematical operator known as differentiation. Known as differentiation. Okay. तो these d by d operator are differentiation. It is something like 2 plus 2 क्या होता है? You know it is 4. बेटा 2 into 3 कितना होता है? You know it is 6. 6. 3 कितना होता है? It is 5. So these 5. are operator, mathematical operator. Similarly, this differentiation is also an operator जो आपको क्लास 9th में हम सिखाएंगे how it works. Okay? हाँ, Okay, sir. okay. So let's see now, let's see the example of this average speed. किसी को कुछ डाउट है एवरेज स्पीड में पूछ सकते हैं। Okay, I guess we should see the examples then. Okay everyone, now solve this particular example regarding this average
Okay, what what is the confuser here? Let me explain. This can be a bit confusing. That's why I write it very clear. This is position. Okay, don't confuse it with the distance. This is position, so it must be very clear to everyone. Now this is a time. I know that some of you might be solving it like, okay, remember, some of you might be solving it considering कि वो 2 सेकेंड कंज्यूम कर रहा है देन 4 सेकेंड कंज्यूम कर रहा है. नो, ये एक स्पैन है कि at 2 यहाँ पर था, at 4 यहाँ पर था. ओके, सो पोजीशन एंड टाइम क्लॉक याद रखना है. ओके, सॉरी, माय मिस्टेक. फर्स्ट थिंग, वो 20 सेकेंड तक मैंने मोशन ही नहीं दी है उसकी, सो दिस क्वेश्चन इज अ बिट कंफ्यूजिंग. राइट इट, यूज इट 10 सेकेंड, द एवरेज स्पीड इन 10 seconds. So, Yeah, can I answer it in the chat box? yeah, you should answer in the chat box. Okay, everyone, you can answer in the chat box. Okay, very good. Correct answer, Dhruv. Divija, it's not correct. I got it. You must be being a bit confused about this. Yeah. Okay, listen, everyone. What I see from your answers is you are considering something like this. Remember, okay, let's see. Let me draw the time scale first. Suppose this is a time scale. So what I am asking, at t is equal to 0, it is at 0. After that time, it moved for this much. How much it is? 20 meter. And this time is 2 seconds. Then at 2 seconds, at 4 seconds, it is where? At 30. 30 means ये distance सिर्फ कितना होगा? 10 होगा ना. तो ये confusion है आपको. You are considering again it as 30. तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. The time used is 2 seconds. The time used is 2 seconds. डिस्टेंस ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं. वो जो 30 है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो यहाँ से यहाँ तक है 30. पोजीशन है दी है हमने उसकी, डिस्टेंस नहीं दी है हमने. क्या दी है? पोजीशन दी है. तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही सोचना है. सो आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकेंड t इज इक्वल टू 6, मतलब फिर से 2 सेकेंड कंज्यूम करें. इन 2 सेकेंड्स कहाँ पे आए? वो 35 पे. सो अगर हमने बात की जैसे ये 30 है, सो टोटल 35 है, बट कवर कितना हुआ होगा? सिर्फ 5. ये है टाइम स्केल. ऐसे फील करना है आपको. तो इसका मतलब एट 6 सेकेंड हो गया, फिर 6 के बाद 8 पे कहाँ पर पहुंच गया है? तो 8 पे वो 55 पे पहुंच गया है. सो t इज इक्वल टू 8 पे कहाँ पे आ गया है? वो 55. मतलब कितना ट्रेवल किया? 30, 40, 50. दैट मीन्स अगेन ये कितना है? 20. फिर नेक्स्ट कितना है? 55 से 560 एंड 35. सो अप टू 90 आया है. मतलब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. कितना ट्रेवल कर लिया उसने ऑलमोस्ट 35 मीटर ट्रेवल कर लिया in each 2 second. Let's see, this is the motion in each 2 second. What is happening here? So इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है. वेरी गुड. शावनी, करेक्ट आंसर. गुड. ध्रुव, विराज, करेक्ट आंसर. So first question is the average speed in 10 second. So average speed in 10 second. Average speed in
10 seconds. So क्या हो जाएगा, v average की अगर हम बात करें, so I can just write v average is total distance. How much the total distance is? 90. The total distance is 90 and total time taken is 10 seconds. So the answer will be 9 meter per second. Directly given था आपको. Then the second one, speed at fifth second. Speed at fifth second. Speed at fifth second. ये आंसर करें, सब लोग आंसर करें. लेट्स सी करेक्ट है या नहीं. लेट्स सी कौन आंसर करता है. ये बहुत ही अच्छा और टफ क्वेश्चन है, लॉजिकल आंसर है ये, बहुत ही. Not correct answer. Rajvardhan, not correct. वेरी गुड सोहम, वेरी गुड. बहुत ही अच्छा गेस था, मतलब सॉल्विंग बहुत ही अच्छा था. वेरी गुड. विराज, इट्स नॉट करेक्ट. सोहम, वेरी गुड. वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर. दैट्स गुड. Rajvardhan, it's still not correct. Sir, I have also sent you the answer. Okay, so you sent up for the second one. Okay, Dhruv, it's correct. Very good, Dhruv. Yeah. Okay, it's correct. Very good. Yeah. So let's see this question. This one is regarding the speed instantaneous. देखो, speed at fifth second. Now the problem is you cannot use the distance up to 5 seconds. Okay. The simple thing, very simple thing is you cannot solve till the 5 second. So what is the most appropriate one to find the speed at fifth second? This span is for 2 seconds, then again 2 seconds, then again 2 seconds. So if someone is asking you the speed at this second, somewhere here, this is the fifth second. So what you can do, you can use whatever data is given near about. So this is your near about data. Clear? Because in this span it was moving same. So you need to solve the fifth second, speed at fifth, v fifth अगर आपको solve करना है तो distance during the fifth second आपको देखनी पड़ेगी. So when it was in fifth second, it was in third column. t is equal to 4 second वाले पे, from 4 to 6. Okay, तो 4 to 6 में देखे कितना कवर किया इसने, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है. The distance is distance upon time. Distance is 5 meter and time taken is 2 seconds. So the speed answer will be 2.5 meter per second. ये हमें करना था फिफ्थ के लिए. क्यों? आप पूरा क्यों नहीं ले सकते थे? आप यहाँ से यहाँ तक नहीं ले सकते थे. अगर आपने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ले लेती तो आंसर क्या हो जाता? तब आंसर हो जाता एवरेज स्पीड. तो अगर आपने ये डिस्टेंस ली होती तो आंसर बन जाता एवरेज स्पीड. क्लियर? बट हमें एवरेज नहीं, हमें क्या चाहिए थी? इंस्टेंटेनियस चाहिए थी. तो इसलिए आंसर रहेगा 2.5 सेंटीमीटर. किसी को कुछ डाउट है इसमें तो बता दें यार. इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो बता दें. ओके. Sir, या sir, I didn't quite understand this explanation. okay, let me explain again then with a different perspective. Let's see, if I want to solve this, I have given, let's see, okay, let's see now. I have given a criteria, a person is moving 2 meter per second.
for 4 seconds. Then how much he will cover? 2 meter per second for 4 seconds. How much he will cover? 8 meters. 8 meters. Quite clear? Okay. Then next 3 meter per second for next 4 seconds. So next 4 seconds, now how much it will cover? 12 meter. 12 meter, very good. Then next it covers with 4 meter per second. How much it will 16 be now? meters. 16 meters. Now I'm asking you speed in, now focus, speed in 12 seconds. What you will do? You will see the total distance upon total time. You will add 8 plus 12 plus 16 divided by how much time? 12. This will be your speed in 12 seconds. Clear? This once you understand? Yes. Now, the problem is, now if I ask you to answer sixth second. Okay, by the way, this is a good example, so I won't erase this one. Let it be here. Okay. Okay. So I won't erase, let it be here for more understanding. So now I want a question for speed in 6 second. Let's say, write it here, speed in 6 second. Now what you will answer? Tell me. Without, you don't need to solve for that. बताओ क्या आंसर होगा? Sir, it will be, Do not solve, just by the data you can see. Just by the data you can see. You don't need to solve for that. sir, it will be 24. No. I am not asking distance. I am asking speed. Speed. 1 point. Oh, No. This is the speed now. For 2 meter per second, first 4 seconds. Yes. Then Sir, it will be 6 meter per second. No. 6th second. Where is the 6th second? It is in the process, second process, na? Let's see. Yes. This is a point A, B, C, and D. Where is the 6th second? The 6th second is during B to C, na? B to C Yeah, process right. 6th second आएगा ना? So B to C Yes. process में देखो what it is, its speed was 3 meter per second. The speed is 3 meter per second. You don't need to solve for that because it is already given. Yes. Okay, let's see more examples and then I'll come to the final one. So speed in, now 5th second क्या होगा आंसर? बताएं, speed in 5th second. the 2 point something. Why it will be 2 point, beta? 4 meter per second, sir. 4 meter per second. Listen everyone, listen. First t0 पर 0 टाइम पे था, यहाँ पर 4 सेकंड तक वो कैसे मूव हो रहा था? 2 से. That means till 4 second he was here. Then next 4 second, that means time for 8 second he was here. 4 second means time for 12 second he was here. You can just answer from these values, na? For first 4 second it was 2. So 5th second where it lies? It lies in the B to C column. So the answer will be 3 meter per second. Next one, 10th second क्या होगा? So 4 meter per second. 4 meter per second. Because this will lie in the third span. Okay, let So me now, write, yes, I answer. yeah, let me write it. This is second span. Okay, this is second span. Okay, let me write the span also here. Let me write it. This is our first span. This is first span. This is second span. This is third span. So now
आई गेस इट्स क्लियर टू यू. 10th सेकेंड में आंसर कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज it is in third span. Now for third second, what is the answer now? 2 meters per second. 2 meter per second. Very good. Because in third second he was in between A and B. A and B. Yeah, 2 meter per second. Clear? So it is in first span. Okay. So to get an instantaneous speed, the conclusion here I want to write, I guess without even solving you can get the conclusion. Instantaneous speed is distance of that span upon time taken in that span. Okay, Okay. distance of that span कितनी है? 12, और time taken in that span कितना है? 4 second. तो 12/4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. 3. This is a simple explanation for instantaneous speed. I guess now it is clear to you that to find the Yes. first second we'll use the third span. पक्का सबको clear है ना? किसी को कुछ doubt regarding this instantaneous speed? Okay, so No, okay, No, sir. so let's add one more question in the list then. Let's add more question in the list. Speed in की जगह इसे कर देते हैं speed at. सब लोग solve करेंगे ये वाला question. Okay. So Yes, sir. speed at, I'll say 9th second. Okay, sir. Then fourth one, last one you solve. Speed, let's say ये 7th second कर देते हैं and इसको